everyone, welcome to Mppsc. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस वीडियो में, जहां पर हम इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को एनालाइज करने वाले हैं 17 जून 2025 ट्यूसडे के एडिशन को. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर दैट, अ क्विक डिस्क्लेमर. Each and every article of this particular newspaper is very interesting, very well written, but we have only included the important articles from the perspective of your exam. Okay, all right. So we have only considered the important articles which we think are important from your exams perspective, and we have not included the editorials. Okay, so yes, everyone, let's proceed further with the very first article. India moving citizens in Iran, Israel to safer places. So we know in the previous editions also we have seen that the tensions between Iran and Israel continue to grow, right? So if we talk about the conflicts, they are escalating between Iran and Israel, right? अभी क्या है ना, बहुत सारे इंडियंस जो है वो अभी भी इन कंट्रीज में है. ओके, ऑलराइट. और अगर देखें तो क्लियर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, इवैक्यूएशन डिटेल्स नहीं है, जिसकी वजह से जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं इजराइल में उनको अभी भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है. ओके, ऑलराइट. सो नाउ इंडियन एम्बेसी इज ट्राइंग टू मूव द इंडियंस टू अ सेफर लोकेशंस, बट एज पर दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल no evacuation plan is currently in place. Okay, so please have a note of it that it is still in the plans. ठीक है, अभी कोई evacuation plan जो है वो नहीं ongoing है. Okay, all right. Now if we talk about this article, it says that the Indian embassy in Tehran is coordinating with Iranian authorities to relocate citizens from targeted cities, while over 100 students have crossed into Armenia. Okay, all right. Now if we talk about Israel, airspace remains closed, right? तो जितने भी citizens हैं कोशिश कर रहे हैं इवैक्यूलेट होने की, दे आर डूइंग इट फ्रॉम रोडवेज. ओके, आई एम सॉरी. So if we talk about Israel, airspace remains closed, but Indian officials are guiding citizens to exit via land borders with Jordan and Egypt. Okay. Now if we talk about recent years, Indian community in Israel has expanded significantly with 25,000 citizens. They are there because of the recent labor agreements. On the other hand, if we talk about External Affairs Minister Jaishankar, he continues discussions with regional leaders to assess the situation. Okay. So let's pray that peace is restored, because war is not good or not a solution for anything and is not good for any nation, right? So yes, everyone, let's proceed to the next news article. I believe we are clear so far. India's total trade deficit narrows to US dollar 6.6 billions in May on low oil prices, strong services exports. So if we talk about this, सबसे पहले we need to understand one point, okay, that what is trade deficit. ओके, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम यहाँ पे ये न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं दैट इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया है ना, बट हमें ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि कितना कम हो गया और क्यों कम हो गया, एंड व्हाट इज दिस ट्रेड डेफिसिट, राइट? वी नीड टू नो दिस. सो इफ वी टॉक अबाउट trade deficit, it is actually a situation when a country's import, okay, is more than its export. ठीक है, ऑलराइट. जब किसी कंट्री का जो इंपोर्ट होता है ना वो एक्सपोर्ट से बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं. ओके, बट अभी ये जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो गया है टू US डॉलर 6.6 बिलियन इन मई 2025. अगर आप मई 2024 के बारे में बात करो तो उससे 30% कम. ओके, ऑलराइट. अभी ऐसा क्यों हुआ है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है ना, राइट? बिकॉज द इंपोर्ट्स आर डिक्लाइंड ड्यू टू falling oil prices, but if we talk about the exports grew driven by strong service sector performance. Okay, on the other hand, if we talk about the total export, as per this article, the total export rose 2.8% to US dollar 71.1 billion, with service exports increasing to 9.4% to US dollars 32.4 billion. Okay, now if we talk about the merchandise export, it shrank 2.2%, but non-petroleum exports grew by 5.1%. Okay, if we talk about total import, it contracted 1% despite non-petroleum imports growing to 10%. Okay, on the other hand, if we talk about the Commerce Secretary Sunil Barthawal, he attributed weak merchandise exports to global oil price volatility.
everyone. If we talk about this news article, why we say that this is important from your exams perspective, क्योंकि what is trade deficit is important. आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सिलेबस का, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम जहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज करेंट अफेयर पूछे जाते हैं, वहां पे इकोनॉमिक्स से भी आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. सो व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, यू शुड नो दिस, राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट इट, वो कितना कम हो गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट. सो दीज नंबर्स, ओके, along with the definition is very very important. ठीक है, all right. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इंडिया बैक्स पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ साइप्रस क्वेश्चन इन स्टेटमेंट. तो कल के एडिशन में हमने देखा था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो साइप्रस में लैंड कर गए थे. वहां पर उन्होंने इंडियन डायस्पोरा है उनसे बात भी की थी, राइट. अभी आपको एक बात पता होनी चाहिए यहाँ से, सबसे पहली बात तो कि जो साइप्रस कंट्री है उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3 से ऑनर किया है. ओके, उनका जो, इफ यू टॉक अबाउट सिप्रस हाईएस्ट ऑनर, इट इज द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3. ओके, और इससे किसको ऑनर किया है, आर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट इट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, द नेम ऑफ द ऑनर, ओके, ऑलराइट, एंड द नेम ऑफ द कंट्री. ओके, सो पीएम मोदी मेट साइप्रस प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलिट्स, sorry, Christodoulos, reaffirming India's support for Cyprus's unity and peaceful resolution of the Cyprus question. Okay, now if we talk about our Prime Minister, he indirectly addressed Turkey, emphasizing India's stance against unilateral actions in northern Cyprus. If we talk about the joint statement that came out of this meeting, it's called for a lasting resolution based on bizonal bicommunal federation as per the UNSC resolution. If we talk about our Prime Minister, he reiterated India's stance on ending conflicts in Israel, Iran, Russia and Ukraine through diplomacy. If we talk about this visit was after Operation Sindoor against Pakistan, and it signals deepening India-Cyprus ties amid Cyprus's upcoming EU presidency in 2026. Okay, now if we talk about this country, it is also supporting India's bid for permanent UNSC seat. It condemns cross-border terrorism from Pakistan and also backs India in international organization. If we talk about the honor, we have already talked about it, and our Prime Minister emphasized global conflict resolution, stating that this is not the age of war. So if we talk about this meeting, यहाँ से दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. कन्वर्सेशन किस किस पर्सपेक्ट में हुआ है, ओके, जो जॉइंट स्टेटमेंट था, ठीक है, वो किस पर बेस्ड था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो इंक्लूड की गई है, राइट. इसके साथ साथ द ऑनर. ओके, ऑलराइट. सो यस एवरीवन, लेट्स प्रोसीड फर्दर. Let's move to the next article. WPI inflation dips to 14-month low of 0.39% in May. ठीक है, अभी देखिए यहाँ आपके लिए क्या जानना जरूरी है, that what is WPI. ठीक है, ये WPI आखिर होता क्या है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है. ठीक है, this is wholesale price इंडेक्स भी होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है, तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. अभी एक बात और, इन्फ्लेशन क्या होता है इसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन से क्या मतलब, द it is this index is actually the measure that indicates, sorry, this, if we talk about this wholesale price index, right, it is actually an indicator that measures the change in the overall price levels for goods before they are sold at retail. मतलब जब तक फॉर इंस्टेंस एक गुड है और जब तक आपने उसको रिटेल पर नहीं बेचा, तो उसके ओवरऑल जो प्राइस लेवल है उसमें कितना चेंज हुआ, इसका जो मेजर है उसको कौन इंडिकेट करता है, आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इसका इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया है टू अ 14-month लो ऑफ 0.39% इन मई 2025. ठीक है, अप्रैल में 0.85%
था, एंड इफ वी टॉक अबाउट मे इट इज 2.74%. ओके, पिछले साल में से इतना कम है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ये डिक्लाइन क्यों है, बिकॉज ऑफ द लोअर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस. ओके, but if we talk about experts, they say they are warning about the geopolitical tensions. These tensions can push inflation higher. If we talk about the overall food prices, they contracted by 1.56 percentage compared to 0.86 percentage in April, with vegetables, onions, potatoes and pulses showing negative inflation. If we talk about vegetables, deflation is observed. It deepened to 21.62 percentage in May from 18.26 percentage in April. Okay. On the other hand, if we are talking about fuel and power, so as per this article, fuel and power saw deflation of 2.27 percentage, reversing April's 2.18 percentage inflation. And if we talk about the ministry, the industry ministry cited price increase in food manufacturing, electricity, chemicals, transport equipment and non-food articles as key inflation drivers. Okay, तो देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डब्ल्यूपीआई होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है. साथ ही अभी इसका जो स्टेटस है वो क्या है. सो दीज नंबर्स, द डेफिनेशन, द टर्म, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Government expects to seal initial tranche of trade pact with US by July 9. Okay, so सबसे पहले तो याद यहाँ पे समझने की बात है ये किस चीज के कंटेक्स्ट में बात है ना. सो इट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज द इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट. बट मैम व्हाट इज बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट? ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो याद रखिए अगर हम बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरीके का फॉर्मल अग्रीमेंट है. फॉर्मल अग्रीमेंट, फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज. ओके, कंट्रीज, कोई दो ऐसी कंट्रीज जो ट्रेड करने जा रही हैं. ओके, ऑलराइट, उनके बीच में एक ऐसा फॉर्मल अग्रीमेंट होता है व्हिच आउटलाइंस द टर्म एंड कंडीशंस अंडर व्हिच दे आर गोइंग टू ट्रेड विद ईच अदर. ओके, सो अगर ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड स्टार्ट करने जा रही हैं, राइट, व्हिच आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस, आउटलाइंस द terms and कंडीशंस. ठीक है, ऑलराइट, तो ये क्या आउटलाइन करता है भाई? टर्म्स एंड कंडीशंस को आउटलाइन करता है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, तो बायलैटरल अग्रीमेंट क्या होता है? कोई दो कंट्रीज जो ट्रेड करना चाहती हैं या करने जा रही हैं तो उनके बीच एक फॉर्मल अग्रीमेंट जो आउटलाइन करता है टर्म्स एंड कंडीशन को जिसके अंडर वो ट्रेड करेंगे. ओके, ऑलराइट, तो ऐसा ही एक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है, चल रहा है. ठीक है, जिसका जो अर्ली स्टेज है इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय जुलाई 9. ठीक है, और बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो कंप्लीट होगा लेटर इन दिस ईयर, दैट इज लेटर इन 2025. Okay, or if we talk about this article, it says that the US negotiators held talks in India from June 6 to 11 and both sides are optimistic about meeting deadlines. On the other hand, one more important thing from this particular article, that by June 9, Trump's reciprocal tariffs will return, making an early agreement crucial for India. If we talk about India-UK FTA, that is Free Trade Agreement, it is in the final legal review phase and is expected to be completed within 3 months. If we talk about India-EU FTA negotiations, they are gaining momentum, okay, and with the next round scheduled for July 7. If we talk about the frequency of India-EU trade discussion, the frequency is increased, improving the chances of an expedited agreement. Okay, so if we talk about it, यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, the timeline, okay, all right, and the bilateral trade agreement and the countries involved. Okay, ये सारी चीजें यहाँ से हमारे लिए जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं to the next article. Meta names Srinivas MD head of India. Okay, very important article. Why it is important? Let's understand. Because Arun Srinivas is now appointed as MD and head of Meta India. So if we talk about appointments,
अपॉइंटमेंट्स, राइट? अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ओके? रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, फिर वो जो अपॉइंटमेंट्स है उससे पहले जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या पोस्ट होल्ड कर रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन वाई वी हैव इंक्लूडेड दिस आर्टिकल इन दिस वीडियो. So Arun Srinivas appointed as MD and head of Meta India, and it will be effective from July 1. Okay, he is currently serving as the director and head of Ed's business in India, and he'll focus on business growth, innovation, and revenue priorities. If we talk about the previous appointments from Meta, Sandhya Devanathan will be leading India and Southeast Asia. Okay. Now, if we talk about Arun Srinivas, he has 3 decades of experience in sales and marketing leadership across various companies. Okay. So please make a note of this name. This is very important. This news is again very, very important. Okay. And if you are a science enthusiast, this news is again very, very important, right? So in the previous videos we have already talked about a flying spider, okay, discovered in Karnataka's Elephant Hill. Okay, now this is about a plant species. Okay, so this new plant species is discovered near Galtaji temple in Jaipur, near Aravali Hill, in Aravali Hills, Jaipur. Now everyone do try to understand the name of this plant species is Portulaca bharat. Okay, now remember, this is considered as endemic and rare because no other population is known, and it is provisionally assessed as data deficient under IUCN Red List. Okay, now the narrow habitat range makes it highly susceptible to climate change and habitat degradation. On the other hand, if we talk about discovery, it is made by Nishant Chauhan. Okay, all right, near Galtaji temple, and Galtaji temple is in the semi-arid terrain of Aravali Hills near Jaipur. Now, if we talk about the scientific recognition, it is confirmed as a new species to science, published in the international journal Phytotexa. Okay. If we talk about the genus Portulaca, it includes 153 species worldwide, known for resilience in dry and extreme environments. And if we talk about India, it hosts 11 species, 4 of them are endemic. Okay. Now, if we talk about the species, it is found in Jaipur, right? Remember that this is the single known location. Okay, all right, and that particular location is found in Galtaji Hills. Okay, all right, as per the team of BSI scientists. If we talk about this rare plants, it emphasizes India's hidden biodiversity, and it also highlights the urgent need of conservation, right? So now let's move towards the end. So everyone, this was the last article of our today's video. I hope that this series is helpful for you. You people are able to understand the important articles which are exam important from this particular series. Your feedback and suggestions are welcome. Please feel free to post your feedback and suggestion in the comment box, right? And please do not forget to like, share, and subscribe. Keep watching. Until next time we meet, take good care of yourselves. Bye bye. Thank you for watching.